important topic which is required in case of chemistry. The first one is periodic table and second one is electronic configuration. And if you are comfortable in periodic table and electronic configuration, then I think you will never face any problem to understand any chapter related with respect to chemistry, whether it may be chapter number 1 or we can say chapter number 2. So today I will discuss first chapter of chemistry. So that is C. So here name of this one is some basic concept of chemistry. Some basic concept of chemistry. तो आपने 9th-10th में सब पढ़ा होगा. First of all matter, then after atom, then after element, molecule, compound, mixture में भी homogeneous, heterogeneous, clear? तो सब चीजें तो बेस है, वो बाद में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल सी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. इट मीन्स सी इन केस ऑफ केमिस्ट्री whenever we are going to form one new product, then we have to remember some rule and regulation. So that type of rule and regulation is included in this type of law. So that is known as law of chemical combination. So mainly see in case of law of chemical combination, 5 different type of laws are there. Number 1, law of conservation of mass. Number 2, law of definite proportion. Number 3, here law of multiple proportion. And number 4, Gay-Lussac law. And number 5 is again we can say that Avogadro law. In case of chemistry, during chemical combination, 5 different type of laws are there. Number 1 is conservation of mass, number 2 is definite proportion, and number 3 is multiple proportion, and number 4 is Gay-Lussac law, and number 5 is Avogadro law. So friends, in 5 different type of law, you have to remember first of all statement, then second one name of scientist, and third one is example. आपको क्या करना है? Number 1 is statement, number 2 is example, and number 3 is name of scientist. आप आगे पीछे कर सकते हो. तो चलो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस हियर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. इसमें स्टेटमेंट क्या है? तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ हियर मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय. इसका मतलब ना आप किसी को बना सकते हो ना आपको किसी को डिकम्पोज कर सकते हो. हियर स्टेटमेंट इज मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय. तो दिस इज स्टेटमेंट and this law was given by Antoine Lavoisier. So this law is given by we can say that Antoine Lavoisier and year is 1789. So during this experiment what will happen? He performed number of experiment in laboratory. And in that experiment one of the most important example is combustion reaction. So here combustion reaction for reaching to above conclusion. Which conclusion? That matter can neither be created nor destroyed. Clear? So what is conclusion? Matter can neither be created nor destroyed. इसका मतलब this statement can be proved with the help of combustion reaction. So now what is combustion reaction? Combustion means here oxygen is required. It means if carbon is reacted with oxygen, then CO2 will form. So weight of carbon is 12 and weight of oxygen is 32, and whenever 12 plus 32 will combine, then 44. So 44 is mass of CO2. मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे 12 ग्राम कार्बन, 32 ग्राम ऑक्सीजन, तो राइट हैंड साइड पे 44 ग्राम CO2 विल कम. तो वही ये है, मतलब मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय. अब देखो, तो नाउ दिस लॉ फॉर्म द बेसिस फॉर सेवरल लेटर डेवलपमेंट इन केमिस्ट्री. इसका मतलब आफ्टर fulfillment of this statement on the basis of this experiment, so many results are invented in our field, that is chemistry. And in that what will happen? So this was the result of exact measurement of masses. So this law is related with respect to exact measurement of masses of reactant and product in any chemical reaction. Friends, whatever thing we are writing left hand side, it is normally known as reactant, and whatever thing we are writing right hand side, it is normally known as product. So again I am repeating, conservation of mass. Conservation of mass, इधर क्या होगा स्टेटमेंट में? तो मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, ये स्टेटमेंट हुआ.
दूसरा it is given by Antoine Lavoisier, तीसरा here example combustion reaction. तो फ्रेंड्स 10th में आपको चैप्टर नंबर 1 में टाइप ऑफ रिएक्शन में आई थिंक दिया था. तो हाउ मेनी टाइप ऑफ रिएक्शंस आर? नंबर 1 रिएक्शन इज कॉम्बिनेशन, नंबर 2 इज डिकम्पोजिशन, नंबर 3 इज डिस्प्लेसमेंट, and number 4 is double displacement, and number 5th one is oxidation and reduction. ऐसे 5 रिएक्शन होते हैं. तो 5 में से हम लोग ने कौन सा लिया? कॉम्बिनेशन वाला, और उसी को बोलते हैं कंबशन रिएक्शन. तो दिस इज कंप्लीट इंफॉर्मेशन रिलेटेड विथ रिस्पेक्ट टू कंजर्वेशन ऑफ मास. नाउ आई विल एक्सप्लेन सेकंड लॉ. तो सेकंड लॉ इज डेफिनाइट प्रपोर्शन. सेकंड लॉ विच इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, डेफिनाइट प्रपोर्शन. So definite proportion is given by Joseph Proust. Here see, name is Joseph Proust, name of scientist है. तो what is statement? तो according to Joseph Proust, a given compound always contain exactly the same proportion of element by weight. Again I am repeating. According to Joseph Proust, a given compound contain exactly the same proportion of element by weight, whatever source of that compound is. Source means two different type of sources are. Actually whatever materials are available in this universe, it may be either natural or we can say that artificial, or we can say that natural and artificial. तो इन लोग ने क्या बोला था? A given compound always contain exactly the same proportion of element by weight. चलो इसके लिए उन्होंने क्या किया? He has taken one example. तो कौन सा एग्जाम्पल? He worked with 2 samples of cupric carbonate. उसने क्या किया? He has taken example of cupric carbonate. तो cupric carbonate naturally and synthetically. Cupric carbonate naturally as well as synthetically. तो चलो उन लोग ने क्या बोला था? ये एक टेबुलर फॉर्म है. तो सैंपल क्या है? cupric carbonate, natural cupric carbonate and synthetic cupric carbonate. In cupric carbonate percentage of copper naturally 51.35 and percentage of copper synthetically again 51.35. oxygen, तो ऑक्सीजन में naturally 9.74 and synthetically again 9.74. और ऐसी कार्बन है तो naturally 38.91 and synthetically 38.91. See friends, उसमें क्या बोला था? A given compound always contain exactly the same proportion of element by weight, whatever its source are. Source may be always two, either naturally or we can say that artificially. तो naturally मतलब it is given by God and synthetically man-made element. तो यहाँ हम लोग ने क्या लिया? cupric carbonate. तो see, now natural cupric carbonate, in natural cupric carbonate में copper is 51.35, synthetically 51.35. So whenever we are comparing percentage of copper, oxygen and carbon naturally as well as synthetically, then see here percentage is always remain same. तो यही चीज ऊपर लिखी हुई है. क्लियर? अब देखो here irrespective of the source percentage of element will always remain same. तो सोर्स क्या है? सोर्स किसी भी मटेरियल का दो होता है. इट मे बी आइदर वी कैन से दैट नेचुरली और आर्टिफिशियली. करेक्ट? इन cupric carbonate, suppose if we are observing cupric carbonate naturally or synthetically, then percentage of copper, percentage of oxygen and percentage of carbon will always remain same, जो कि बाद में प्रूफ हुआ. उसके बाद validity, how we can say that this type of things are again means possible. So validity of this type of thing can be again explained on the basis of different type of compound. तो ऐसा नहीं कि cupric carbonate पे ही आया. After that we had taken so many different type of example, and that example, suppose if that example or that compounds are compared on the basis of synthetic and naturally thing, then percentage will remain same. उसके बाद cupric carbonate का बहुत सारे एग्जाम्पल लिए और सब में जो परसेंटेज आता है naturally and synthetically, तो both are same. And last one, so this, due to this reason, this law is also known as definite composition also. इसका पहला नाम क्या है? Definite proportion.
और दूसरा क्या है, डेफिनाइट कंपोजिशन। तो कभी कोई क्वेश्चन पूछे कि स्पेसिफाई स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ डेफिनाइट कंपोजिशन, तो भी यही आएगा, डेफिनाइट प्रोपोर्शन तो भी यही आएगा। मतलब इन केस ऑफ क्यूप्रिक कार्बोनेट आप सिंथेटिकली बनाओ या नेचुरली बनाओ, परसेंटेज ऑफ कॉपर, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन एंड परसेंटेज ऑफ कार्बन विल ऑलवेज रिमेन सेम। मैं फिर से आपको रिवाइज करा दूं, लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। तो दिस लॉ वाज गिवन बाय जोसेफ प्राउस्ट, और उन्होंने क्या बोला था, इफ वी आर सिलेक्टिंग एनी एलिमेंट, if we are selecting any compound, in that compound so many elements are there, atoms are there, तो percentage of that type of atom or element with respect to naturally and synthetically it will always remain same। और ये कॉपर कार्बोनेट का आपको एग्जैक्ट परसेंटेज याद रखना है। अब ये परसेंटेज आया कैसे, तो विद द हेल्प ऑफ मास स्पेक्ट्रोमीटर, जो आपको अभी आगे बताया जाएगा। सी, ऐसा नहीं कि इट इज वैलिड ओनली क्यूप्रिक कार्बोनेट, after we can say that calculation of percentage in cupric carbonate we had taken so many different type of example, और ये लो वहां पे भी सक्सेसफुल हुआ। क्लियर हुआ कि नहीं? इसलिए बोलते कि इट इज वैलिड बाय सेवरल एक्सपेरिमेंट। और ड्यू टू दिस रीजन अनदर नेम ऑफ दिस लॉ वाज अगेन डेफिनाइट कंपोजिशन। तो एक मैंने आपको बताया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा मैंने आपको बताया हियर डेफिनाइट प्रोपोर्शन। अब तीसरा जो आता है दैट इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। नाउ थर्ड लॉ इज अगेन वी कैन से दैट लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, फिर से नेम ऑफ साइंटिस्ट, तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन इज गिवन बाय डाल्टन एंड इन विच ईयर 1803। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन गिवन बाय डाल्टन इन 1803। उनका स्टेटमेंट क्या था, अकॉर्डिंग टू डाल्टन इफ टू element can combine to form more than one compound, again I am repeating, if two different element can combine to form more than one compound, then the masses of one element that combine with a fixed mass of other element are in the ratio of small whole number. Correct? Again I am repeating, if two different element can combine to form more than one compound, then the masses of one element that combine with a fixed mass of other element are in the ratio of small number। ये आपका स्टेटमेंट है। चलो नाउ वी विल एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। तो फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन कंबाइन विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म टू कंपाउंड, तो one is normally known as water and second one is hydrogen peroxide. Here hydrogen will combine with oxygen to form two different compound, and out of these two different compound one is water and second one is hydrogen peroxide। चलो इसी को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, तो here water will form, तो weight of hydrogen is 2 ग्राम, weight of oxygen is again 16 ग्राम, है ना, एक ऑक्सीजन एटम है। Here H2O will form, जिसका वेट क्या है 18 ग्राम है। देखो 2 + 16 तो 18 आ गया। अब हाइड्रोजन 2 ग्राम है, ऑक्सीजन यहाँ O2 हो गया तो 32 ग्राम। देखना यहाँ पे सिंगल O है और यहाँ पे O2 है, तो वेट ऑफ हाइड्रोजन इज 2 एंड वेट ऑफ ऑक्सीजन इज 32, तो यहाँ क्या आएगा 34। तो 34 मतलब हाइड्रोजन पेरोक्साइड। फॉर्मूला ऑफ वाटर इज H2O एंड फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज H2O2। अब चलो ये स्टेटमेंट, ये जो फॉर्मूला है वो हम लोग ऊपर देखते हैं। यहाँ पे कंबाइन कौन हो रहा है, हाइड्रोजन, जिसका मास दोनों में फिक्स है 2 and 2, बट मास ऑफ ऑक्सीजन विल चेंज, एक बार 16 आता है और एक बार 32 आता है। तो यदि मैं 16 और 32 का रेशियो लूं तो हमेशा 1:2 ही आएगा। क्लियर हुआ? तो देखो यहाँ क्या दिया है, हियर द मासेस ऑफ ऑक्सीजन एक बार 16 है और एक बार आपका 32 है, विच कंबाइन विथ फिक्स मास। किसका मास? हियर फिक्स मास ऑफ हाइड्रोजन दैट इज वी कंसीडर 2, तो बियर अ सिंपल रेशियो दैट इज 16:32, मतलब 1:2 विल कम। देखो 16:32 इट मीन्स 1:2 विल कम। तो ये स्टेटमेंट में उसने वही बोला था। देखो यहाँ क्या बोला, इफ 2 एलिमेंट, तो कौन से 2 एलिमेंट, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इफ 2 एलिमेंट कैन कंबाइन टू फॉर्म 2 कंपाउंड, देन द मासेस ऑफ वन एलिमेंट दैट कंबाइन विथ अ फिक्स मास ऑफ अदर एलिमेंट आर इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर। करेक्ट? अगेन आई एम रिपीटिंग, if two element can combine
to form more than one compound. So more than one compound, which one? So one is water and second one is hydrogen peroxide. Whenever two different elements, it means hydrogen and oxygen, will combine, so two different compounds will form. One is water and second one is hydrogen peroxide. So here mass of hydrogen is fixed. देखो यहाँ लिखा हुआ है, if two element, that is hydrogen and oxygen, can combine, if two element, which one two element? तो hydrogen and oxygen can combine to form more than one compound. तो more than one compound का मतलब एक आता है H2O और दूसरा आता है H2O2. The masses of one element that combine with a fixed mass. तो fixed mass किसका है? हाइड्रोजन का. तो fixed mass किसका होता है? हाइड्रोजन का. Other element are in the ratio of small whole number. तो किसका रेशियो लिया मैंने? 16 और 32. So that is, we can say that 1:2. So in this way, here three different types of laws are completed. The first one is law of conservation of mass. Second one is law of definite proportion. Third one is, we can say that, law of multiple proportion. Now two laws are remaining, and that two laws are, so number one is Gay-Lussac law, and next number one is, again we can say that, Avogadro law. तो यहाँ पे मैंने क्या बोला था, इन केस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, तो 5 different type of laws are there. Number 1 is conservation of mass, number 2 is definite proportion, and number 3 is, again we can say that, multiple proportion. So in case of conservation of mass, which example? Here combustion reaction. In case of definite proportion, so copper carbonate, and in case of multiple proportion, here formation of water and hydrogen peroxide. Any doubt? तो अब आपको ये 3 लॉ में क्या क्या करना है? अभी 2 लॉज आर रिमेनिंग, और ये 2 लॉज में देखो, ये 5 के पांचों लॉ में, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिमेंबर स्टेटमेंट. सेकंड वन, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिमेंबर स्टेटमेंट. सेकंड वन, नेम ऑफ साइंटिस्ट, एंड थर्ड वन इज एग्जाम्पल. तो आपको 3 चीजों का ध्यान देना है. कौन कौन सा? नंबर 1 इज स्टेटमेंट, नंबर 2 इज एग्जाम्पल, एंड नंबर 3 इज नेम ऑफ साइंटिस्ट. और हम लोग कभी भी बोले तो आपको स्टेटमेंट वगैरह चेंज नहीं करना है. थैंक यू. चलो फ्रेंड्स, इन केस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जैसे मैंने बताया था, 5 different type of laws are there. तो 5 different type of laws में मैंने 3 पहले आपको बता दिया. अब नाउ रिमेनिंग 2 laws. तो जो 4th वन है, दैट इज, वी कैन से दैट Gay-Lussac लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम. 4th लॉ क्या है? Gay-Lussac लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम. तो ये किसने दिया था? तो दिस लॉ वाज गिवन बाय Gay-Lussac इन 1808. मैंने बोला ना, 5 लॉ में फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिमेंबर नेम ऑफ साइंटिस्ट. तो इसने क्या बोला था? अकॉर्डिंग टू Gay-Lussac, ही ऑब्जर्व दैट when gaseous or whenever gases combine or are produced in a chemical reaction, they do so in a simple ratio by volume, provided all gases are at same temperature and pressure. Again I am repeating, according to Gay-Lussac law, first of all, this law is applicable for gaseous condition. This law is applicable for gaseous condition, and here whenever 2 or more than 2 gaseous molecule will combine with each other, then whatever gaseous molecule will combine with each other, its temperature and pressure should be same. तो वही देखो, he observed that when gases combine or are produced in any chemical reaction, they do so in a simple ratio. Here ratio should be fixed. Simple ratio by volume. देखो रेशियो 2 टर्म से आता है, एक आता है विथ रिस्पेक्ट टू मास और दूसरा आता है वॉल्यूम. तो हियर they do so in simple ratio by volume, provided all gases are at same temperature and pressure. तो Gay-Lussac law is applicable for gases. Gay-Lussac law is applicable for gases, and whatever gases will combine with each other, this temperature and pressure should be same. Its temperature and pressure should be same.
चलो फॉर एग्जाम्पल इसी चीज को हम लोग एग्जाम्पल से, ये स्टेटमेंट है, नेम ऑफ साइंटिस्ट है, एंड देन आफ्टर हियर एग्जाम्पल. तो एग्जाम्पल में क्या होगा, तो वेन एवर 100 ml of hydrogen combined with 50 ml of oxygen, then according to this law volume will be not 150 but volume will be 100 ml of water vapor will form. Again I am repeating, if 100 ml of hydrogen combined with 50 ml of oxygen, then here 100 ml of water will form. आपको लगेगा कि 100 plus 50 150 होना चाहिए, बट यहाँ पे ये लो, आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ दिस लो 150 नहीं होगा. हियर वी कैन से दैट ओनली 100 ml वाटर विल फॉर्म. चलो कैसे होता है, सी हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड वाटर. तो यहाँ देखो हाइड्रोजन इज 100 ml, ऑक्सीजन इज 50 ml एंड वाटर इज 100 ml. तो हाउ दिस 100 ml वाटर विल कम. तो देखो इन दिस 100 ml वाटर, तो 50 ml related with respect to H2 and 50 ml related with respect to O2. देखो यहाँ पे 50 ml of oxygen will combine with 50 ml of hydrogen. Here 50 ml of oxygen will combine with 50 ml of hydrogen. तो finally 100 ml water will form. हमको क्या लगता है 150 होना चाहिए, लेकिन 150 नहीं होगा. करेक्ट और नॉट. तो हियर सिंपल रेशियो इज 2:1. ये हाइड्रोजन क्या है 100 है, तो ये 2 है. वैसे भी 100 जो है 50 का 2 टाइम है. तो हियर रिएक्टेंट साइड 2:1 रेशियो इज देयर रिलेटेड विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. तो आफ्टर दैट ये सिंपल रेशियो है 2:1 बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल. नाउ इट इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन बाय वॉल्यूम. एक्चुअली लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन बाय मास आता है. पहले क्या आता था, मास आता था. बट आफ्टर इन्वेंशन ऑफ गे-लुसाक लॉ, आफ्टर इन्वेंशन ऑफ गे-लुसाक लॉ, हियर मीन्स व्हाट विल हैपन, तो अनदर नेम ऑफ दिस लॉ, तो लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन बाय वॉल्यूम. करेक्ट. तो दिस इज कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ गे-लुसाक लॉ. तो गे-लुसाक लॉ में क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस लॉ is given by Gay-Lussac in 1808, and this law is applicable only for gaseous molecule. This law is applicable for only for gaseous molecule. तो वहां पे स्टेटमेंट क्या आएगा, he observed that when gases combine or are produced in chemical reaction, in any chemical reaction, they do so, मतलब reaction will start in such a way that in a simple ratio by volume, not we can say that mass, and whatever reactant we are taking, its temperature and pressure should be same. तो यहाँ पे क्या है 100 ml of hydrogen combined with 50 ml of oxygen to give 100 ml of water vapor. कैसे, देखो ये 100 ml है, ये 50 ml है, तो 50 ml of oxygen will combine with 50 ml of hydrogen. Here 100 ml of water will form. Now here simple ratio क्या होगा 2:1. तो after invention of Gay-Lussac law, यहाँ पे एक नया टर्म आया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन बाय वॉल्यूम. अभी तक क्या आता था, लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन बाय मास आता था, बट आफ्टर इन्वेंशन ऑफ Gay-Lussac लॉ ये क्या आ गया, वॉल्यूम. तो दिस इज कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ Gay-Lussac लॉ. अब आता है केमिकल कॉम्बिनेशन, जो फिफ्थ वन है दैट इज एवोगैड्रो लॉ. जो पांचवा लॉ है दैट इज एवोगैड्रो लॉ. तो व्हाट इज एवोगैड्रो लॉ, तो फिर से हियर इट इज गिवन बाय एवोगैड्रो इन 1811. तो दिस लॉ वाज गिवन बाय एवोगैड्रो इन 1811. इसने क्या बोला था स्टेटमेंट, तो इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस है ना, equal volume of gases at the same temperature and pressure should contain equal number of molecule. तो आप ऐसा बोल सकते हो कि एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो लॉ is related with respect to equal number of molecule. Clear? This is related with number, this is related with volume. Now according to Avogadro law, what will happen, here equal volume of gases at same temperature and pressure should contain
इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, मतलब एवोगैड्रो लॉ रिलेटेड विथ रिस्पेक्ट टू नंबर, गे-लुसाक लॉ रिलेटेड विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम। चलो इसी में हम लोग आगे लेके चले तो एवोगैड्रो मेड अ डिस्टिंक्शन बिटवीन एटम एंड मॉलिक्यूल विच इज क्वाइट अंडरस्टेबल इन प्रेजेंट टाइम, मतलब whatever definition right now we are accepting, it is related with respect to Avogadro law। यहाँ क्या आएगा, Avogadro made a distinction between atom and molecule which is quite understandable in present time, मतलब जो भी आपका right now we are accepting definition of atom and molecule, तो this is related on the basis of Avogadro theory। अब नेक्स्ट आता है, चलो एग्जाम्पल, तो फिर से मैं बोलूं यहाँ पे सी, इफ वी कंसीडर अगेन, ये एग्जाम्पल है, इफ वी कंसीडर अगेन द रिएक्शन ऑफ H2and O2 टू प्रोड्यूस वाटर, तो वी सी दैट 2 वॉल्यूम ऑफ H2 combine with 1 volume of oxygen, 2 volume of H2 combine with 1 volume of oxygen to give 2 volume of H2O, करेक्ट और नॉट। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि H2 प्लस हाफ O2 गिव अस H2O। अब जो हाफ O2 था वो 2 से सबको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो 2H2 आ जाएगा प्लस 1 O2 आएगा और प्रोडक्ट साइड पे 2H2O विल बी देयर। अगेन आई एम रिपीटिंग, इफ वी कंसीडर अगेन द रिएक्शन ऑफ H2 and O2 to produce water, we see that 2 volume of hydrogen combine with 1 volume of oxygen to give 2 volume of water without leaving any unreacted oxygen, मतलब यहाँ पे कोई भी चीज बचता नहीं है। जैसे देखो इधर पे क्या था, 50 ml ऑक्सीजन, तो whenever reaction is completed तो ऑक्सीजन is consumed 100%, but here hydrogen will remain, we can say that 50, है ना। तो whenever, see this is example, if we consider again the reaction of H2 and O2 to produce water, we see that 2 volume of H2 combined with 1 volume of oxygen to give 2 volume of water without leaving any unreacted oxygen। जो आप रिएक्शन के साथ भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो, जैसे देखो this is H2, this is half O2, here we can say that H2O will form। अब इसी 2 को मैं यहाँ लिखूं तो 2H2 O2 एंड देन आफ्टर 2H2O, ये जो रिएक्शन है इसको क्या करने का, 2 से मल्टीप्लाई कर देने का, तो ये आपका स्टेटमेंट आ जाएगा। इट मीन्स 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन दिया है ना, 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन विथ 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, दिस इज 1, तो हियर 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर विल फॉर्म, एंड हियर आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ वाटर तो ऑक्सीजन इज अनरिएक्टेड, oxygen is not remaining here, it means oxygen will consume 100%, देखो without leaving any unreacted oxygen। now तो this can be explained with the help of this figure। तो देखो फिगर है यहाँ पे, this will explain 1 volume of hydrogen, 1 volume of second hydrogen and 1 volume of oxygen। तो whenever देखो ये हाइड्रोजन कंटेनर ऑक्सीजन, तो whenever see 1 volume of hydrogen, second volume of hydrogen will combine with oxygen, तो 2 volume of water vapor will form। ये कंटेनर देखो स्मॉल है और ये वाला बिगर वन है, क्लियर। नाउ नोट दैट इन दिस फिगर ईच बॉक्स कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, देखो यहाँ पे 1 1 1 दिया है, इसी को बोलते हैं इक्वल नंबर। नोट दैट इन दिस फिगर ईच बॉक्स कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। In fact, Avogadro could explain the above result by considering the molecule of polyatomic material। In fact, Avogadro could explain the above result, मतलब the same result can be explained with the help of, है ना, with the help of polyatomic molecule। तो what is polyatomic? More than 2 atoms are there, उसको बोलते हैं polyatomic। और ये सब क्या है, diatomic है। तो if H2 and O2 were considered as a diatomic as recognized now, so then the above result are easily understandable। Which result? This one, formation of water।
So if H2 and O2 are considered as diatomic as recognized now, right now जो हम लोग मानते हैं, then the above results are easily understandable. An Avogadro proposal was published in French journal डी फिसिडी. ये आपका एक जर्नल है जिसके अंदर एवोगैड्रो का जो प्रपोजल है इट वाज आल्सो गिवन. क्लियर? तो सी इन केस ऑफ गे-लुसाक लॉ, तो दिस इज रिलेटेड विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, एंड एवोगैड्रो लॉ, तो दिस वन इज रिलेटेड विथ रिस्पेक्ट टू नंबर. तो दिस इज कंप्लीट इंफॉर्मेशन which will included in law of chemical combination. So friends, in case of law of chemical combination, 5 different type of laws are there which is easily completed here. In case of 5 different type of law, you have to remember number 1 statement, number 2 name of scientist, and number 3 examples. So that is complete information. Clear? Thank you.